This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा मौला। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। तमाम दोस्तों को एक बार फिर याद ही मदद। Thank you for joining us on this additional 2 session with your request on Rosa, Ramzan, and we have added Eid to this subject. This will be a 2-parted subject today and tomorrow morning on the very channel. यहाँ पर हम जो हमने पिछले 2 हफ्तों के अंदर रोजा रमजान को समझने की कोशिश की थी, and the question which we have received और जो सवालात इन सेशन के अंदर आए थे, उसकी वजह से 2 सेशंस को ऐड किया गया ताकि तमाम सवालात का सेटिस्फाई मुकम्मल कंप्लीट जवाब दिया जा सके. Just for our recap, we were talking about the roza and what it means. The roza means to restrain oneself. लेकिन सवाल हुआ था कि किस चीज को अपने आप से रोकना है. Is it the food or is it something more than that? ये रोजे के जो जाहिर के हैं, शरीयत के हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है या इसके पीछे कोई बातिनी अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई थी. We had talked about from Pir Pindiyat Jawamardi, the Faramin book of Imam Mustansibullah II, in which Imam says कि मोमिन शख्स 30 दिन के नहीं बल्कि 360 दिन के रोजे रखता है और रोजा मोमिन के लिए रोजाना वाजिब है, फर्ज है. और रोजा मुंह को बंद करना का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाना है, बल्कि अपने आप को किसी चीज से, किसी बोलने से, किसी राज के फाश करने से, to restrain oneself from talking and keeping this secret. और हमने वजह दीन से कुछ मिसालें ली थी. हमने इस बात को अच्छी तरह से समझा था. We had talked about
this very clearly, that we are, as an Ismaili Muslim, the follower of the Imam Zaman, and per Imam's Farman, what is written is for all, but batin is for us. जो लिखा गया है वो सब के लिए है, लेकिन उसका जो बातिन है, उसका जो एसेंस है, वो हमारी जमात के लिए है। अब हमारे लिए ये जरूरी हो गया, it become necessary for us to understand the batin of the Shariat, batin of the tariqat. And then from Wajdin we understood the Mu'mineen take the haqiqat from the tariqat and tariqat from the Shariat, and those are the attribution of the Mu'mineen. अब यहाँ पर मोमिनीन कौन है जिसकी बार बार बात हो रही है? Those who follows Allah, Rasul and Ulil Amra minkum. Minkum, amongst you. Atiullah wa atihu Rasul wa Ulil Amra minkum. Imam is the Ulil Amr amongst us. And we cannot follow Rasul without following the Ulil Amr, and we cannot follow Allah without following Ulil Amr and Rasul. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam have made it very clear for the Jamat of the time that whomever I am master, jiska main Mola hu, Ali is their master और अली उनका मौला है। आज अली ज़मान, इमाम ज़मान, जिसकी बैयत में हम अपने आप को मोमिन कह सकते हैं, क्योंकि फरमान क्या था? अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कोई कहे, if someone says, I will follow some of the Imam's Farman, I will follow some of the Haqiqat, then I will follow some of the Tariqat, and then I will follow some of the Shariat. It is like saying that I wanted to be a doctor, I wanted to be a scientist. While I am going to the university to become a doctor and a scientist, sometime I will go to the higher school and sometime I will go to primary school. Have you ever seen an adult who is going to university to become a doctor or engineer, decides to go to the nursery, KG, ECD center, primary level, secondary level, high school? At the same time, he is going to university to achieve his higher education, the PhD for the doctorate. And if you find such a man, what would you call him? अगर आपको ऐसा कोई शख्स मिल भी जाता है, पहले तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा आपको, लेकिन चलो कोई अगर आपको मिल भी जाता है तो आप उसको क्या कहेंगे? कौन से नाम से उसको पुकारेंगे आप?
कोई ज्यादा अक्लमंद तो नहीं हो सकता है शख्स कि जो यूनिवर्सिटी की लेवल पर बैठकर कहे कि मैं नर्सरी एंड केजी के अंदर भी जाऊंगा। if we are true believer of the Imam Zaman at the level of हकीकत जहां पर आज हमारा इस्माइली तरीका खड़ा हुआ है, हम शरीयत से नर्सरी और केजी से पास होकर तरीकत से सीखकर प्राइमरी सेकेंडरी एंड हाई स्कूल से सीखकर पास होकर हम हकीकत के अंदर आए हैं आज। और फिर हकीकत के अंदर आने के बाद कोई कहे कि मैं अब शरीयत को पालूंगा और मैं शरीयत के फराइज को अंजाम दूंगा। There would be the example of an adult drinking milk out of the bottle because I enjoyed it so much when I was a baby, and there was a really good way of drinking milk. Have you ever seen an adult do that? So first, you will not find that, but if you do, what would you call that? सबसे पहले हमें अपने आप का जायजा लेना होगा। One should reflect on oneself. Are we the Mu'mineen, the Ismailis of the Shah Imami Tariqa, the Ismaili Tariqa, which is based on Hakikat, and the follower under the bayat of the Imam Zaman, तो फिर हम इस मकाम पर बैठकर बार बार शरीयत की तरफ यानी कि उल्टे कदम नहीं चलते हैं। जिस तरह से कोई एडल्ट बच्चा माँ के छाती से दूध पीने की ख्वाहिश नहीं करता और ना ही कोई पीएचडी करने वाला किसी केजी के अंदर जाके बैठे, क्योंकि वो उन तमाम मराइल से फ्रॉम ऑल द स्टेजेस उसने क्रॉस करके वो एक बुलंद मकाम पर पहुंचा है, एक आला एज के अंदर एडल्ट बन गया है। आए हम कुछ सवालात को कवर करते हैं जो हमारे पिछले हफ्ते के अंदर जो हमने जाहिर और बातीन के रोजे की बात की थी, उसको एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करें, क्योंकि नाचीज को ऐसा लगता है दैट कुछ लोगों को अभी भी शायद ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। एक बात I wanted to make it clear, as an Ismaili under the bayat of the Imam, we do and follow the Faramin of the Imam. And if we do not find a Farman of the current Imam on a subject, we refer to the Farman of the previous Jama. As Imam himself in his Jama in 1957 at the time of Taknashini have made it very clear to the Jamat that my grandfather, he has set a clear path for the Jamaat, and I will
try my best to follow on that path. यानी कि वो फरामीन जो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने फिदा हो, उन्होंने जिन सब्जेक्ट के ऊपर फरामीन फरमाए हैं और जो रास्ता हमारे लिए चुना है, इमाम फरमाते हैं कि मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा। ऐसा नहीं है कि इमाम पर वो फर्ज है। इमाम ये हमको समझा रहे हैं कि अगर मैं कोई ऐसा फरमान नहीं करता हूं जो मेरे दादा ने कर दिए हैं, तो वही रास्ता हमारे लिए क्लियर रास्ता है। And then if Imam does give us a latest farman, then we always and always and always follow current Imam's farman. And I'll give you an example. In our previous Jama, Imam said, when a girl turns 14 and a boy turns 16, they should get married. Imam in our present Jama says, even if you are 35-year-old, but if you are not standing on your own 2 feet, being a self-sufficient, do not get married. So which Farman we will follow? The current Jama. Because Hazir Imam in his current Jama given us a Farman on the Rosa, but we have sufficient enough Faramin of Imam Aka Sultan Muhammad Shah, and in the book Pir Pindiyat Jawam Mardi, which in my eye is the encyclopedia of Ismaili Tariqa. You will find the attributions of the Mu'mineen in that Faramin book, which Imam calls it a Pir. And Pir himself said, Pir puchine chalo. So when you have a question, you can refer to this book, Pir Pindat Jawam Mardi. And this book will tell you the attribution of a Mu'mineen and how the Roza are kept. Which Roza? Not the Roza of Zahir, of the Shariat, the Roza of the Batin of our Tariqah. And you can see on your screen, I've displayed this Farman from the Pir Pindat Jawam Mardi, from the chapter Roza-e-Batin. The true Mu'min is such who from Shariat to Tariqat and Tariqat to Hakikat moves forward. यहाँ पर एक बात सोचने की है। इमाम फरमाते हैं कि हकीकी मोमिन वो है, सबकी बात नहीं करते हैं। हकीकी मोमिन वो है जो शरीयत पे खड़ा नहीं रहता है, वो आगे चलता है, तरीकत पर आता है। फिर हकीकी मोमिन वो है जो तरीकत पर भी खड़ा नहीं रहता है, वो हकीकत पर आता है। वो ही हकीकी मोमिन है। वो शख्स नहीं जो हकीकत पर खड़ा रहकर बार बार डगमगा कर कभी तरीकत की तरफ और कभी शरीयत की तरफ चला जाए, यानी कि उल्टे कदम चले। ये हकीकी तरीका नहीं और ना ही ये हकीकी मोमिनों की एट्रीब्यूशन है। हकीकी मोमिन वो करता है जो इमाम फरमाते हैं। इमाम कहे दिन तो दिन, कहे रात तो रात। चूंकि हमने बैयत ली है, और आपको याद है कि बैयत में हमने ये कहा था कि या मौला, हमने अपने आप को आपके सुपुर्द किया है। We have dedicated ourselves and our soul to you. We have submitted our free will to you. जब भी हमने अपनी फ्री विल इमाम को दे दी, तो अब इमाम हमारी रूहानी
दौरवनी करने के लिए मौजूद है और वो हमको शरीयत की तरफ पीछे नहीं, तरीकत की तरफ पीछे नहीं, बल्कि हकीकत से मारिफत की तरफ ले जाना चाहता है. Then Imam says, we'll move forward, we'll enter into hakikat, which is the batin of shariat and tariqat. क्यों कि हमारा मजहब बातीन का है, तो हमको शरीयत से सीख कर, शरीयत के ऊपर अमल करके, तरीकत से सीख कर हकीकत पर चलना है. तो अब हमें ये देखना होगा कि रोजे की हकीकत क्या है, उसका बातीन क्या है. तो मौला ने क्या फरमाया, रोजा इज फॉर ईयर लॉन्ग, रोजा ऑफ द मंथ is to find that one night. जो शरीयत में रमजान का रोजा था, वो उस रात की तलाश थी कि जिसके अंदर हमें हकीकी खुशी, समझ और तावील मिलने वाली थी. वो रात की तलाश करनी थी, और जब वो रात हमें मिल जाए तो रोजा रखना था. क्या मतलब रोजा रखना था? मुंह बंद करना था. क्या मतलब मुंह बंद करना था? चुप रहना था. डू नॉट डिस्क्लोज द हकीकत ऑफ द रमजान, द इमाम, द सीक्रेट ऑफ द इमाम टू अदर्स. रोजा का क्या मतलब था? कि इमाम के राजों को दूसरों पर फाश ना करना. और रमजान का रोजा किसके लिए वाजिब था? जो रमजान तक पहुंच जाए, जो रमजान को पाले. And I'm not saying this. We will look at this from some of this ayat. So let's come to our today's subject, because we had covered all of this, and I wanted to just recap for the listener over here. So here comes our today's lesson. And remember, we have based this on your questions. When someone asks, what does it mean when you find Ramzan, when you reach to the Ramzan? So we will start from here. This ayat, which we had referred to in our previous session, is right in front of you. In last session, we have read 183 first of Surah Baqarah, but today we will read 185 first, and then we will come back to refresh our memory with 183. Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 185. The month of Ramzan is that in which was revealed the Quran, is guidance for the people and clear proof of the guidance and citation. So, यहाँ पर आपने देखा, अब अंडरलाइन वर्ड आ रहे हैं. I need your attention. So, whoever sight, देखे, जो पाल ले, जो इमाम को देख ले, जो इमाम के राजों को पाल ले. Whoever sight the month of Ramzan, let him fast. अगर आपने रमजान को पाया ही नहीं है, तो फिर रोजा आपके लिए नहीं है. कौन सा रोजा? भूखा रहने का रोजा नहीं. वो तो शरीयत में सबके लिए था. शरीयत में रमजान का रोजा रखने के लिए आपको अली की पहचान जरूरी नहीं है. शरीयत में रोजा रखने के लिए आपको अली की पहचान जरूरी नहीं है. लेकिन इस आयत के अंदर हमको बताया गया कि जो रमजान
जो कि मौला अली का टाइटल है। जब आप अली की पहचान तक पहुंचे तो उनको गैरों के ऊपर वाज़े ना करें, अपने तरीके मजहब की बातें गैरों को ना बताएं, चुप रहें, रिस्ट्रेन योरसेल्फ, रोजा रखें, मुंह बंद रखें। हम आगे आते हैं कि क्या मतलब है और किसके ऊपर रोजा जरूरी है। आप तमाम जानते हैं कि रोजा इज नॉट कंपल्सरी फॉर दोज इन ट्रैवल। मैं शरीयती रोजे की बात कर रहा हूं। रोजा इज नॉट कंपल्सरी फॉर दोज हु आर इन ट्रैवल, जो सफर में है और जो बीमार है। इसकी वजाहत की है सैयदना पीर नासिर खुसरो ने अपने वजह दीन के अंदर चैप्टर 33 के अंदर, कि जो अभी रूहानियत के रास्ते पे चल रहा है, those who are in the journey in their spiritual levels, उसके लिए रोजा जरूरी नहीं है, चुप रहना जरूरी नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट, it is upon them to ask question. How amazing it is that today's session is set on the questions that we received in previous session. Those who have not reached the highest level of the ranks in the recognition of the Imam and have not sought and cited the marifat of Ali Zaman, the true Ramzan, then the roza is not compulsory for them. And जो बीमार है, those who are sick, जो conceptual यानी कि इल्मी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, हमारे तरीके के अंदर, हमारे तरीके की समझबूझ के अंदर जो बीमार है, यानी कि उनके कॉन्सेप्ट्स इल है, दुरुस्त नहीं है, अभी तक उनको मजहब की समझ नहीं है। उसकी मिसाल दी है कि उसकी मिसाल एक बीमार शख्स की है। बीमार शख्स चूंकि कमजोर होता है, इन दी बातीन, इन दी तरीका, जो बीमार शख्स है वो अपने मजहब में कमजोर होता है और वो उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। कौन सा रोजा? मैं बार बार इसको दोहराऊंगा ताकि हम भूल ना जाए कि मैं बातीन के रोजे की बात कर रहा हूं, ना कि शरीयत की रोजे की, क्योंकि शरीयत का रोजा हकीकतों पर वाजिब नहीं है, लेकिन बातीन का रोजा हम पर वाजिब है कि जब हम इमाम के राजों को पाए तो हमारे मजहब, हमारे इमाम, उसके फरामीन, उसके इस्म आजम और जो जो आपने पाया है इमाम की तरफ से वो किसी को ना बताएं, मुंह बंद रखें, रोजा रखें। मेरे ख्याल में अब ये बात ज्यादा वाज़ेह हो गई कि जो अली ज़मान तक पहुंचे, so whoever sights, जिसको अली ज़मान का दीदार हो जाए, जो अली ज़मान तक पहुंच जाए, और मेरी बात को नहीं माने आप, इमाम के फरमान को सुने। If you experience anything in your batin, do not disclose. जब आपको इबादत में कोई चीज मिले, it belongs to you, do not disclose. When you have the noor and the didar and the happiness,
do not disclose. Do what? रोजा रखें. आपको कुरान के अंदर दो मकाम पर बड़े अजीब और गरीब रोजे के रेफरेंस मिलेंगे अगर आपको शौक है कुरान पढ़ने का. तो मरियम को कहा गया कि तुम एक दिन का रोजा रखो, एक दिन का. जकरिया को कहा गया कि तुम 3 दिन का रोजा रखो, और दोनों को उस वक्त कहा गया रोजा रखने के लिए जब उन्होंने बातीन के सवाल किया. जब मरियम ने कहा कि मैं लोगों को किस तरह से मेरे इस बातीन की जर्नी को समझाऊंगी, तो खुदा ने कहा तुम रोजा रखो. जब जकरिया की दुआ कबूल हुई तो उसने खुदा ताला से कहा कि मैं इस बात को कैसे समझूं, इस बातीन के राज को मैं कैसे समझूं. तो खुदा ने कहा तुम 3 दिन रोजा रखोगे तो तुम समझ पाओगे. जब हमें वो दिन नसीब हो कि जब हम रमजान तक पहुंचाएं, अली जमान तक पहुंचाएं, तो हम पर वाजिब है कि हम खामोश हो जाएं ताकि हम उसको एनालाइज कर सके, अपने अंदर उसको समझ सके, उसकी हैप्पीनेस को हासिल कर सके, उसकी हैप्पीनेस को हम अच्छी तरह से समझकर, जब्स करके, डाइजेस्ट करके, ताकि हमें पता चले कि हमें इमाम ने क्या इनाम दिया है. ये क्या इनाम है जो मौला ने हमको दिया है. इसके लिए रोजे का वर्ड यूज हुआ था. दौरे शरीयत में समझाना था कि वो मोमिनीन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि जब तुम अली के राजों को जानो तो गैरों पर ना वाजे करना. उसके लिए एक जाहिरी मिसाल दी गई कि खामोश रहना. वजह दिन चैप्टर नंबर 33, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी ऑफ रोजा एंड तावील. अगर आपके पास वजह दिन उर्दू की है, उसके अंदर पेज नंबर 309 से 321 तक आपको इसका जिक्र मिलेगा. रिमेंबर कि रोजा जो था वो जाहिर से बातिन तक पहुंचने के लिए था, यानी कि शरीयत से तरीकत और तरीकत से उसके बातिन तक पहुंचने का एक सफर था. शरीयत पे बैठना नहीं था, तरीकत की तरफ चलना था. तरीकत पर बैठना नहीं था, हकीकत पर चलना था. और आज भी हकीकत पर बैठना नहीं है, मारिफत की लेवल तक पहुंचना है, जिसके लिए इमाम ने मेहरबानी करके हमें इसमें आजम दिया है. फरमाते हैं thus God's allusion is fasting in the month of Ramzan is that the one who joins the dawat of the tawil. आपने देखा शरीयत से बातीन की जो दावत कबूल करता है, क्या मतलब है उसका कि जो अतीउल्लाह व अतीउ रसूल के बाद उल्लिल अम्र मिनकुम की दावत, यानी कि इमाम की दावत, यानी कि इमाम की तावील, यानी कि इमाम के फरमान को सीख करता है, ढूंढता है, वो हकीकत तक पहुंचता है. The reality of the Shariat from the batin and not from the zahir. उसको वो खजाना कहाँ मिलता है? तावीलात और समझ का, फरमान और इसमें आजम का उसके बातीन में मिलता है. मजहब के अंदर प्रॉफिट एंड तंजील, कुरान का जाहिर
है, और नातिक के बाद असाज एंड इमाम उसका बातीन है, उसकी तावील है। तो हमको जाहिर से बातीन की तरफ जाना था। The day signifies the zahir and the tanzil, and the night signifies the batin and the tawil. जो शरीयत थी वो जाहिर यानी कि दिन की तरफ इशारा था, और जो तावील थी वो इमाम और उसके बातिन की तरफ इशारा था। और शायद हम इस इशारे को ना समझ पाए। एक और क्वेश्चन की तरफ आए। जो क्वेश्चन था रमजान के बारे में, फॉर द फॉलोअर्स ऑफ द रमजान, रमजान के मानने वाले, क्या ये महीने की बात हो रही है जो इस्लामिक कैलेंडर के अंदर आता है? नहीं, रमजान दी अली जमान की बात हो रही है, अव्वल अव्वल अली मुर्तजा की बात हो रही है। और अभी हम इसी किताब से, इमामों के फरमान से उसको प्रूव करेंगे कि रमजान मौला अली के लिए और अली जमान के लिए इस्तेमाल होता है। For the follower of Ramzan who are believers, जो बेईमान है उसकी बात नहीं, जो ईमान वाले हैं, that understanding is through the तावील, उसकी समझ तावील से आती है, not through the ज़ाहिर, उसकी शरीयत से नहीं आती है। In the ज़ाहिर, inedible things are accumulated during the day, जो खाने पीने की चीज है ना वो दिन में जमा करनी होती है, यानी कि शरीयत के अंदर से जमा करनी होती है। Once the day is elapsed, जब शरीयत खत्म हो जाती है, during the temporal night, जब उसका बातीन आ जाता है, so ज़ाहिर fasting of Ramadan, they may eat the physical edible that were collected during the temporal day. कि यहाँ पर जो हमने अपनी शरीयत के अंदर से जमा किया था वो एंड ऑफ द डे उसका बातीन, उसका मक्स खाना होता है। नाचीज एक और मिसाल देना चाहता है इसकी। जो शरीयत के रोजे और शरीयत से खाना चाहते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो घास और दरख्त के पत्ते खाता है, जो शरीयत की मिसाल है। और जो मोमिन है, जो बातीन को जानते हैं और बातीन से खाते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है जो दरख्त के फल खाता है, दरख्त के फल खाता है, यानी कि बातीन को चखता है। ये थी मिसाल शरीयत और हकीकत की। आए हम ढूंढे और देखें कि क्या वाकईअन रमजान अली के लिए था और है, या सिर्फ हम ऐसे ही अपनी तरफ से कोई बात आपको बता रहे हैं। ये चार्ट आपने पहले भी देखा है, लेकिन पहले हम सिर्फ इतने आधे चार्ट को देखते थे। आज आपके सामने पूरा चार्ट मौजूद है। जिस तरह से साल के 12 महीने हैं, इसी तरह से हमारे दीन की 12 हुदूदे दीन है, हायरार्की ऑफ रिलीजन है। ये जाहिर के 12 महीने बातीन के 12 हुदूदाने दीन की तरफ इशारा करते हैं। रिमेंबर, जो जाहिर में है वो सबके लिए है, उसका जो बातीन है वो हमारे लिए है। तो मैं हमारे इस बातीनी मजहब की बात कर रहा हूँ, मैं जाहिरी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बातीनी मजहब की बात कर रहा हूँ। आप इसमें देख रहे हैं, हम पूरी लिस्ट को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर 9 पर आ जाए। नंबर 9 जो है, द नंबर 9 इज द मंथ
of Ramadan is Islamic calendar. And I believe all of you know that part. And look at the chart of Hudud-e-Din. Number 9 is for the AZIZ, which is the title of the foundational Imam Mola Ali. तो जब आप रमजान तक पहुंचे, जब आप हुदूद-ए-दीन की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते, रूहानियत की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते, जब आप तावील, असास और अली तक पहुंच जाए, यानी कि नूर तक पहुंच जाए, तो यहां पर आपने रमजान को देख लिया, रमजान को पा लिया, तो मुंह बंद कर दें, रोजा रखें। अब ये हुदूद-ए-दीन की जर्नी जो है, सीढ़ी है, वो क्या है? ये रूहानियत की एक सीढ़ी कौन सी है जिस पर चढ़कर हमको मौला अली के राजों तक, मौला अली की तावील तक पहुंचना है? आप देखें, पहली सीढ़ी जो मुस्तजीब है, उसके सामने महीने को भी देखें, कौन सा महीना है? मुहर्रम का महीना है। और मुहर्रम का महीना क्या होता है? द मंथ ऑफ फॉरबिडन। जब आप मुस्तजीब के मर्तबे पर हैं, तो you should not be saying anything. You are forbidden to give other any knowledge. इसलिए मुहर्रम का महीना मुस्तजीब से कंपेयर किया गया कि मुहर्रम का महीना एक मुस्तजीब की मिसाल पर है और मुस्तजीब मुहर्रम के महीने की मिसाल पर है, और वो फॉरबिडन महीना है, यानी कि मुस्तजीब किसी और को तालीम नहीं दे सकता है। माजून, माजून महदूद Sir, sorry सफर to का महीना है। sir, sorry to interrupt you, sir. A few friends are asking if you can repeat in English as well. जी, will do. The mustajib are such a moment which have accepted to learn the true knowledge of Imam. And while you are on the first level of Hudud-e-Din, the hierarchy of religion, then your example is like a Muharram, the first month, because you are on the first level of Hudud-e-Din, then you are forbidden to give knowledge to others. Second, Mazun. And the translation of each one of these in English is right here in the second column. You can see it right there in second column. The one who has very limited knowledge, and that person is an example of suffer, void. क्योंकि अभी तक उसके पास पूरा knowledge नहीं है, he is avoided of the true and complete knowledge. Because he is not complete yet. He is not there yet. The third month and the third level of hierarchy. तीसरा महीना इस्लाम के कैलेंडर में और तीसरा रैंक हुदूद-ए-दीन में, हमारे तरीके में, वो माजून मुतल्लक का है। चूंकि माजून मुतल्लक का मतलब है the one who has a borderline इज़न, यानी कि इसके पास अभी इतना इल्म है कि वो दूसरों को सिखा सकता है। The example of them is the third month, the Rabiul Awwal, the first day of spring. आपने देखा? Do you see it? Do you comprehend how our tariqa is the tariqa of the batin, and how we should have, must have, the complete knowledge, the ilm of the Imam, so we can
follow the tariqah and we can follow the imam. Because when we don't, we do things which are not good for our soul, and it does not make our imam happy, because we are not learning his true ilm. Let's come to the fourth, Da'iye Medud. Imam Zaman recently have made all of us Da'iye Medud. Da'iye Medud, the caller, but it's very limited. The example of that is like a second day of spring or the end of the spring. But then comes Hujjat, the Pir, the sixth level or the sixth month of the calendar. And what is that? Jamidin Tayyar Al-Saniya, sorry. Jamidin Al-Saniya, the second of the preached land, the last of the preached land. चूंकि दाइये मुतल्लक पहला वो होता है कि जो जमीन के ऊपर दावत फैलाता है, the one who preached in the land. Then comes the Pir, who is the second and the final, who comes and they preach on the land. Because Hujjats are the final word, the final amr of the Imam. Imam sends the Da'i to prepare the land, and then the Hujjat to finish the Dawat of the Tariqah. Let's come to 7. Bab. Bab, the Hujjat Azam, that son of the Imam who will be the next son. The example of the Hujjat Azam, the Bab, or the next Imam is the month of Rajab. And look at the meaning of Rajab, the respected, the honorable. क्योंकि वो आगे जाके इमाम बनने वाला है. He is the example of Rajab, the month of Rajab, the 7th month of Islam, the most respected, the honorable. Number 8, Imam himself. When I say Imam himself, meaning all of the Imam. Imam Barhaq, very important point. वो दाढ़ी वाले मौलाना नहीं जो मस्जिद में खड़े रह के अजान देते हैं. मैं उन पेश इमामों की बात नहीं करता हूँ. मैं इमाम बरहक, इमाम आले नबी, औलाद Ali, the true Imam of the progeny of the Muhammad and from the progeny of the Ali, selected by Allah and the Rasul. Imam Barhaq, he is the example of Shaban, and the meaning of the Shaban is the most secret. I hope you are seeing the trend. And then comes the 9th month, the Ali, the Asas, the foundation Imam, the Tawil, the Ramzan. And Ramzan has many meanings, but one of the meaning I found was burning heat. Tawil is the example of that. Shariat is cold. जो है वो है बस. Tawil is like a burning heat. It will warm your heart and your mind. It will cook you to such a temperature where you will become gold. आपको पता है सोना कितनी तपीश के अंदर जाके सोना बनता है. Gold cannot become gold unless it has extreme heat.
Momin does not become the Momin until he receives the heat, the tawil of the Imam, Imam Asas, Imam Ali, Imam Zaman. I'm going to stop here. So we have a few minutes for questioning. Inshallah, today we have covered everything and all the questions that you have sent to us after the previous session. If there was any kami, kotai, shortcomings, that is mine, and I ask for your forgiveness. Both Nawazish, thank you. We can ask if you have any question, then we can go to them. So, Subhanallah, Subhanallah, sir. Sir, I don't see any question at this moment. So, friends, please share your questions in the chat room. If anyone has any question, please unmute your device. Aziz, sir, I have a question. G. You mentioned earlier something about fasting in terms of keeping silent or keeping the secret silent of if you witness the month here being the tawil being the asas, the rank of the asas. I understand that you explained a little bit about the batin, the deeper batin. If something is revealed to you, then you keep that to yourself. But is there also a relationship here with keeping secret the rank in the outward sense, meaning not something which is that deeply revealed to you, like in your mushahida or your batin, but the idea of the rank of Imam Ali's true reality? Is that something also which one is supposed to keep hidden? And if that is the case, does that still apply today, or is that something which was applicable, say, 1,000 years ago? Because some observers have noticed that this seems to be a time of unveiling. So to what extent does this level of tawil apply about keeping the secret of the asas maintained in the state of fasting? One word will answer your complete question. Undeserving. That is the key word. The tawil, the recognition, and the secret of the Ali was always available to those who were deserving and should not disclose to who are undeserving, not deserving. ना हक को इमाम के राज ना बताएं. What does that mean? Yesterday, today, the time of unveiling, and even tomorrow. Those who are not deserving, na hak, then the roza is compulsory today as it was compulsory in the time of Shariat, in the time of Hakikat, and in the time of Marifat as well. क्यों? कि roza, the batini meaning is to restrain yourself from giving the Hakikat, the Marifat of the Imam Zaman to whom? Not deserving. So if you keep this one word in mind when it comes to Rosa, do not disclose to those who are not deserving. Then you can take any time in this cycle. The time of Adam, time of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, or time of Shah Karim. Doesn't matter anymore. Even though today is the time of unveiling, and I agree with you. I agree with you. But to whom? Who should you reveal to? We should be very, very careful who we reveal the secret of the Imam, the Tawil of the Imam. G.
So we have one question. Friends asking, so we have to do taqiyya, which is spiritual fasting, to not disclose knowledge to unbelievers? ओके कमरे साहब पूरा सवाल वाजे तौर पर समझ में नहीं आया, आधा समझ में आया। अब एक मरतबा Yeah, और I think इसको it's so. I think it's friends say so. We have to do. I don't know. It's a word taqiyya or taqwa. So which is तकिया, so it ओके says so तकिया, we have to do. ओके Yeah. So we have to do taqiyya, which is spiritual fasting, to not disclose knowledge to unbelievers. यस 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 डेफिनेटली दैट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तकिए का वर्ड ही का मतलब होता है किसी चीज को कंसील कर देना, छुपा देना, या अपने आप को छुपा देना या राजों को छुपा देना। टू कंसील योरसेल्फ टू वन सेल्फ फ्रॉम द अदर्स। यस दैट इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। Okay. So I don't see. Yeah, Yeah, go ahead, yeah, Inara. Madad Aziz sir. I have a question. So you know how you said you need to do takia, but as Kyle said, nowadays knowledge is available everywhere. It is a time of unveiling. So how because knowledge about our tariqa is out there, how are you doing takia? Like how does it happen? जी, very good question, Inara. Thank you for asking. And you and Kial both are correct. There is so much information available today. So much information available today. Even then, there are time where we should not disclose things in public. Public meaning in front of the deserving and undeserving. Because I'm sure in the audience, there are some deserving and then there are some undeserving, correct? But we have to be very careful what we are saying. Ali Zaman was not in hurry to give tawil to all. Why are we in hurry? Imam Zaman is giving only the secret farman to the Jamat. Why are we in a hurry to disclose them? Imam is giving only the smileys. Now here I'm going to prove my answer to you. If this is a time of unveiling, then Imam should be giving Ismi Azam to all. Is he doing that? No, he's not. Even though this is a time of unveiling, the time of unveiling is a dawat, invitation to those who are deserving to pay close attention to the hakikat, to the Imam, and then seeking the knowledge of Imam from those who should be giving the knowledge in such a way, in such a language, with such a vocabulary that from the one hand, they are disclosing the secret, but in the other hand, they are not saying anything. And I'll give you one example and then I will conclude. Peer have disclosed the marifat to the followers, to the Jamaat in their Ginan of their spiritual journey and of their spiritual success. But can we tell they have done it or not? Probably some can and some cannot. You know why? Because they use such a language, such a vocabulary that everyone cannot understand unless they have two things: Hakiki ilm and little bit marifat in the ibadat. I think I have made my point very clearly. We need to be very, very careful.
Ji. Thank you. Right, sir. I don't see any question. I think there's one question friend asking, is Hazrat Adam Foundation Imam? Hazrat Adam is what? Foundation Imam? Yes. Is Hazrat Hazrat Adam? Adam? Yes, that's what it. Hazrat Adam was the Khalifa, the Paigambar-e-Awwal of our cycle. Hazrat Adam was Paigambar-e-Ilahi, a Paigambar or Khalifa-e-Ilahi of our time, which time? Of our cycle, the new cycle of this 7 day. He was the first prophet and first Khalifa assigned by the Khudawan Ta'ala or the Imam of that time. AZIZ is the first Imam after the Natik. So in the time of Adam, the Shish alayhi salam would be the AZIZ of the Natik, the Adam, as Harun was the AZIZ of Musa and Ali was the AZIZ of Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Ji. So I don't see any more questions. I would like to add one thing. If the person who had asked the question about Adam and AZIZ, if you are reading this somewhere where this kind of knowledge is shared and given, I would request you to double check your sources, read the books as Imam has prescribed of the Hudud al-Din from its original source. And there are many, many books from the original source. And find those da'is and ujatan and find those ginan of the peers in which they have spoke about Adam and his Pegambari and his Khilafat. Find from the original source. Thank you. Thank you, everybody. Ya Ali Madad. Inshallah, we will continue tomorrow morning on the second part of this journey. And we will talk about the Eid after the month of Ramzan. So please join us tomorrow morning, 9 o'clock, inshallah. Thank you, everybody, for joining us. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Yali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Yali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Yali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali